Hello, good morning to all my dear students. Now today we are going to start. This is the third lecture of motion chapter. Okay, so student, previous classes we have discussed what is the speed, velocity, distance, and object in water. And now today we are going to start the three equations of motion. It is very much important of these equations for exam point of view. So student, there are three equations. First one is v equal to u plus at. This is the first equation of motion. Okay. Second one is s equal to ut plus half at square. This is the second equation. It is represented for distance covered by object. Okay. And third one is v square equal to u square plus 2as. So this is the third equation. Second and third कई टाइम मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है. ओके, सो स्टूडेंट इन इक्वेशंस को कैसे ड्राइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड्स. सो हमें इनको ड्राइव करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन. स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो स्टूडेंट these are the three equations we have discussed in before some times. Okay, and what is v for final velocity, okay, u for initial velocity, s for distance covered by object, t for time, and a for acceleration. Okay, so these are the key terms for first equations of motion and second equations and third equation. So first of all we have plot the graph object a and b. That means कोई भी ऑब्जेक्ट है अभी a कंडीशन पे है वो b पे पहुंचेगा. Okay, that means उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा and final velocity. Okay, let's see. So first of all we draw and plot the graph that is 0, x and y. These are the axes. Okay, x axis पे हम टाइम को लेंगे because टाइम इज मतलब कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरी करेगा. दैट मींस टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल the condition that is 0 या o, a, b, c and d. Okay, so this is the time t. Initial velocity that is u. Okay, जब हम start करते हैं तो u is the initial velocity and total velocity that is v. Okay, and final velocity minus initial velocity that is v and d. So that is v minus u. Okay, so these are the key terms. So first of all we know that for write the first equation motion we know that according to the definition of acceleration, what is the definition of acceleration? Change in velocity with respect to time. So what is acceleration? Acceleration को हम denote करते हैं small a से. Okay, this is a small a. And change in velocity, that means final velocity minus initial velocity upon time. So student, a equal to what is final velocity? Final velocity that is small v, initial u upon t. Okay, fine. So t is transpose, that is at equal to v minus u. Then v equal to u को यहाँ ट्रांसफर करिए तो u plus at. So student, this is the first equations of motion we derive. Okay, ये यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं बट इसको ड्राइव करना एग्जाम में नहीं आता है because it is very simple. First equations. Okay, and now we discuss second equations of motion. So this is the first equation. Okay, now next second equations of motion.
So what is second equation of motion? So इसमें second equation of motion depends करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अभी A पोजीशन पे है तो B पोजीशन पे जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. दैट मींस A से आपको B तक पहुंचना है. ओके, दैट मींस S का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. दैट मींस अभी कंडीशन यहाँ पे है. ओके, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ से A पे जाएगा, मतलब इसका रेक्टेंगल बॉक्स कवर करेगा, देन वो ट्रायंगल कवर करेगा. दैट मींस आपको यहां से यहां तक पहुंचना है. ओके, उसके लिए आपको एक इक्वेशन ड्राइव करना है. ओके, सो नाउ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. ओके, सो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस. ओके, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट आप देख रहे हो यहाँ पे कि दो फिगर दिख रहे हैं. दैट मींस एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है AODC एंड ABD. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD. Okay, fine. Area of triangle ABD. What is area of triangle ABD? That means 1/2 base into height. That means BD. Okay, student, this is clear. Now plus area of AOCD. Area of rectangle क्या होता है? Length into breadth. So what is length? That is AO into what is breadth, that is OC. Okay, fine. Now what is AD? AD क्या है? This is time t. So this is t. And BD, what is BD? That is V minus U. Okay. Okay, student. Now what is AOC? That means U, that is U into what is T? So UT. Okay, fine. Now next, student, आपको पता है V equal to U plus AT, then V minus U equal to AT. Okay, so here equation number 1. Okay, from first equations of motion, क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? V इक्वल टू U प्लस AT, देन V माइनस U इक्वल टू AT. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सो स्टूडेंट, पुट द वैल्यू ऑफ V माइनस U इक्वल टू AT इन इक्वेशन नंबर 1. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ S इक्वल टू हाफ, दैट इज T, V माइनस U इक्वल टू AT. सो दिस इज AT. Okay, plus UT. Okay, now S equal to 1/2 A T, 2 times a T into T, so TT square, that is UT. So student, we can write this UT plus half AT square. So student, इस तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन को ड्राइव कर लिया. Okay, fine, write down fast. Now we discuss third equations of motions. Now स्टूडेंट देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस की बात हो रही है. सो क्लियरली हम लोग डिस्टेंस से स्टार्टिंग करेंगे. तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. ओके, फाइन. सो स्टूडेंट, यू नो व्हाट की डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे. सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ट्रापेजियम दिख रहा है यहाँ पे. ओके, दिस इज अ पैरेलल साइड. ओके, and this is the
नॉन पैरेलल साइड दिस इज ओके। सो एरिया ऑफ ट्रापेजियम दिख रहा है स्टूडेंट, ट्रापेजियम कौन सा दिख रहा है, ओ ए बी एंड सी। सो S equal to area of trapezium OABC ओके। सो स्टूडेंट आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रापेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। स्टूडेंट आप इस ट्रापेजियम में देखिएगा कि पैरेलल साइड कौन कौन सी है, दैट इज OA एंड BC ओके, दिस इज द पैरेलल साइड। सो 1/2 OA in sum 1/2 sum of parallel side, that means AO plus BC okay। and multiply by height, what is height, that is AD या OC ले लीजिए, that is OC। so is that clear, OA plus BC okay fine। now next S equal to AO, what is AO, that is U plus BC, that is BC, that is V total velocity okay। and what is OC, OC is the time, T for time, equation number 1। now we know that जबकि V equal to U plus AT, then V minus U equal to AT okay। now next, so what is the T, so T equal to V minus U upon A, equations number 2। so आप स्टूडेंट T का वैल्यू हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट वैल्यू ऑफ T in equation number 1। so what is this, so student S equal to 1/2 U plus V into what is T, T is the V minus U upon T okay। now is that clear कि T का वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। स्टूडेंट आप इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं V plus U okay। now so A plus V and A minus V। so now next S equal to 1/2 okay A square, sorry here A okay fine। so 1/2 is that clear, and now single bracket V plus U, so that is V plus U into V minus U okay। so S equal to 1/2 in bracket A square minus B square okay fine। 2A का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने लिख दिया हमें 2AS equal to V square minus U square। and now we discuss and U square को ट्रांसपोज कीजिएगा तो U square plus 2AS equal to V square। so now we can write this V square equal to U square plus 2AS okay। so this is the third equations of motion। so student इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करना सीखा। एंड इस चैप्टर में केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाकी हैं जो इन 3 फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे ओके। स्टूडेंट I will send PDF for numerical questions okay, so you can do it। and this is the chapter number 8 will be finished। next turn we will discuss chapter number 9 okay। and thank you so much।